hi, namaste. मैं हूँ निष्ठा And I'm Stuti. and we are back with another episode of Namaste Narrative. So it's our 18th episode and okay, whatever. I'm not sure. ठीक है, 18th या 19th episode है और first episode of basically 2026 है and we are back doing it like in person. Last time we tried things didn't work and it's okay. I feel we can keep trying until something works out. हमने शायद सारे frames check नहीं करे. We were not very sure how to go ahead about it. This time we are retrying. But it really triggered. It really triggered. Let's not talk about it here. एक बारी No, I think let's be honest with our audience. So Okay. when we were both young, like really little girls, हम दोनों को बहुत ज़्यादा body image issues थे. And we are still trying to work around it, right? We are still work in progress. So is everyone. तो उस दिन जब हमने वो shoot किया, तो it sort of triggered those things again. And after that, but we used that trigger as a fuel. और उसके बाद से we have really been working actively on our fitness journeys. So yeah, now go on. Okay, so yeah, we are trying. So let's see. And in case you like this one, so let us know so that we are like upcoming में हम ऐसे ही करने वाले हैं. So if you like this frame, if you like the way we are talking now, you feel it more personal, you feel the connect, like बहुत personal connect feel हो रहा है. So we'll try to do it this way only because online was anyways not working. Plus we personally also kind of didn't like it that much towards the end. So yeah, that's the thing. So yes. So and तो प्लीज कमेंट करके बता देना if you like प्लीज this. बता देना. तो that's और अगर लगता है कि कुछ चेंज करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, प्लीज वो भी बता देना. we'll do that. yes right. So that's the another thing. ठीक है, तो ये वाली बात होगी. अब हम क्या करेंगे, हर क्वार्टर में हम एक मेन टॉपिक लेंगे, उसके सब टॉपिक्स लेंगे and we'll talk about it. So the first quarter we are talking about is inner clarity is equal to outer action. The more you are clear from inner, the more you will talk about, like more you will be aligned with your outer action. Basically मतलब क्या कि आपको actual में जो चाहिए वो आपको inner से अंदर से clarity होनी चाहिए, तो आपका जो outside environment है वो वैसे ही reflect करेगा चीज़ों को. तो ये एक फंडा है जिसपे we are working for this quarter. So we want you guys to work with us on that. The more you get inner clarity, the more you will get outer action. ठीक है, तो ये एक चीज़ है. अब इसके लिए फर्स्ट एपिसोड वी वांटेड टू टॉक अबाउट वाज डेटिंग ऐप बिकॉज दैट्स लाइक वेरी हॉट टॉपिक दीस डेज एंड जेन जी के लिए इट्स लाइक और भी उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ है. मिलेनियल्स के लिए भी है, मतलब वी आर बोथ मिलेनियल्स के लिए भी है. बट आई थिंक द मोर द जनरेशन इज इवॉल्विंग दे आर हैविंग इवन मोर ऑप्शंस. हमारे पास तो ऐप के भी इनिशियली इतने ऑप्शन नहीं थे ना कि मैक्स टू मैक्स क्या था, बम्बल था, टिंडर होगा, हिंज होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी वर्ड, मैंने एक आध ट्राई किया था. बट आजकल तो वो भी बहुत सारे, देयर आर टू मैनी ऐप्स, लाइक टू मैनी कि ये डेटिंग के हैं, ये मे बी हुकअप कल्चर के लिए है, एंड देन देयर इज अ होल मैट्रिमोनी इरा जिसकी तो कोई एंडलेस वो ही नहीं है. मतलब देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स देयर. सो इफ यू आर ऑन डेटिंग ऐप और अगर आप ट्राई करना चाहते हो, सो I mean, we want to talk more about it. We are talking, this will be an unfiltered conversation first of all. We are just talking just like that. Okay, tell us, maybe we want to know your views as well in comment. So yeah, unfiltered dating app conversation or millennials के लिए matrimony app, especially people who are in their 90s. And क्योंकि हम people who are born in 90s, like sorry, people who are born in 90s because सबसे ज़्यादा rant we are seeing for them about being single on the internet right now. तो है भी यार, it's difficult, मतलब कभी कभी हो जाता है. हाँ, I can understand. I can understand your point of view. So I बहुत सारी details पे तो नहीं जाएंगे, but have you ever tried? Give me a maybe. I don't want you to reveal बहुत details, but have you ever tried a dating app? ऐसी कोई बहुत डिटेल्स हैं भी नहीं स्तुतु. मतलब मेरी मैं कभी किसी डेटिंग ऐप पे थी नहीं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि बम्बल डाउनलोड कर ले, लाइक इट विल हेल्प यू इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो मैं आई वाज जेन्युइनली नाइव थिंकिंग कि बम्बल पे That's fine, it's okay. बम्बल पे फ्रेंड्स भी बनते हैं क्योंकि उस पे एक पूरा वुमेन सेक्शन है या नेटवर्किंग ऐसे कुछ तो था. Only women can initiate a conversation in Bumble. That's the only different thing about Bumble. I know that. I've never tried. Okay. तो मैंने बम्बल डाउनलोड किया था.
बट कुछ 3-3.5 घंटे ही मैं उसको रख पाई एंड आई वाज लाइक नो आई कांट डू दिस, इट जस्ट डजंट सिट राइट विद द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम. सो आई डिलीटेड बम्बल 3-3.5 घंटे में ही. उसके अलावा आई हैव नेवर बीन ऑन एनी डेटिंग एप्स. And I don't plan to be on any dating apps. I don't really understand the concept of dating apps in general and dating in general. I mean, yeah. I mean, let's talk about this only. Like, what do you don't like about the concept as such? Like, how do you want to go ahead with, if you want to meet someone in your life, how do you want to go ahead about it then? If you don't want to... ऐसे चलते चलते कहीं पर कोई मिल जाए. Bollywood movie. Oh my God, you are the one. No. से ढूंढ रहा हूँ तो भी हो बस. That's more of a Bollywood movie concept. Now let's talk practicality. So, I mean, obviously, if you want to be with someone, you need to talk to that person. That's right? the first part, लोगों से बात करना. But I do it obviously for a there is living, talking but I stage. cannot talk. Like I cannot talk to people like. Then how do you go? Yeah. Then how do you want to go ahead about? So I mean, okay, let's. स्तुति को आज मेरी मम्मी ने फुल ऑन तैयार करके बिठाया कि आज इससे सच निकलवा दी, ये लड़का ढूंढेगी कैसे, क्योंकि इसको शादी करनी है, ये लड़का ढूंढेगी कैसे. हाउ डज शी प्लान? ऐसा है? No, ऐसा नहीं है. But I still want to. We are with this. Consider this is a therapy session for people and us as well, right? For us. थेरेपी के लिए तुम मुझे वैसे कांटेक्ट कर लो, स्तुति को वैसे कांटेक्ट कर लो. No, I'm not the right person for a therapist. I just can still try to be a healer, but no, I'm not a. You can still be because you have a psychological degree. I don't. ठीक है, तो फिर हम कमिंग बैक टू डेटिंग ऐप्स. तो हाँ, तो मैंने बेसिकली एक मैच मेकिंग ऐप है, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, इट्स लाइक गेटिंग वेरी पॉपुलर दीस डेज. उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत धांसू है, तो मैंने वो डाउनलोड करी ऐप एंड नॉट अंटिल यू सेड मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि मैंने वो ऐप सिर्फ 15 दिन के लिए डाउनलोड की थी. मैंने एक न्यू मून पे डाउनलोड करी और अगले फुल मून पे वो ऐप डिलीट कर दी. 15 दिन वर रियली कंज्यूमिंग एंड एनर्जी ड्रेनिंग फॉर मी and I realized that I'm really not made for this whole app thing. And 15 दिन में I only matched with like 3 people. Only 3? 3 are enough for 15 days. Or you want 15 matches in 15 days? That would be too much. जिस तरह से कि एक like 2 people they sent me interest, एक को मैंने भेजा था. So let's not get into details. But let me tell you my thoughts. What I feel is when you go to dating apps or say any app, like any app where you want someone to meet you, there are too many options, but there are no options. हाँ, वो जो हम बात कर रहे थे उसने about paradox of choice. So I feel that like, and this is the therapist in me, psychologist in me speaking, that when we have all of these apps, right, we have like hundreds of apps right now जिस पे लोग जाते हैं. And they think that they have like all of these choices of people. They feel कि इतना बड़ा एक pool of people है, and you know we have so many options, we have so many choices, but that's the biggest myth. Because उन एक ऐप पे अगर hypothetically 100 लोग हैं, उन 100 में से आपको शायद सिर्फ 10 ही पसंद आएंगे, उन 10 में से शायद आप 5 को ही पसंद आओगे, और उन 5 में से म्यूचुअली शायद आप एक के साथ भी वाइब ना करो, आपको नहीं लगे कि you know I can be with this person. So for serious dating, for serious relationships, if you really are looking for love, I don't think so apps really work. Saying that, it's not a generalized thing, because but people have met on Hinge and Bumble and have married because there are too many stories out there that we met on Hinge and we got married, and people saying that. अभी वो बीच में ट्रेंड भी चल रहा था निष्ठा, that I replied to मैंने सोचा कि एक मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी क्या ही हो जाएगा, and then they were married. That's what I'm saying कि generalize नहीं कर सकते, because there are people who we both know personally who have met on Tinder or Bumble and they have eventually gotten married and they have beautiful families now. So, but for me personally, I think the kind of person that I am, apps would not work, because I want a very एक तो I don't think so you can also do that. मुझे लगता है कि मैं मल्टीपल लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ at once. I wouldn't expect the other person to be like that. अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, okay, good for you. मैं 10 से एक साथ बात नहीं कर सकती, मैं 2 से भी एक साथ बात नहीं कर सकती, मैं एक से ही बात करती हूँ टाइम पे. And if I don't feel like, then I move to the next. तो लेकिन इसमें I just want to give one more perspective, and this is not my perspective, neither I'm doing it. So अगर मैं बोल रही हूँ तो ये नहीं कि मैंने करा हुआ है, मैं करना चाहती हूँ. But then understand the point of an end user. I am like somebody who is in their
say 30 to 35 year of range, or say 27 to 32 year of range, and they are into mindset of finding that one relationship which they want to take a long term. I'm not talking about marriage, just a relationship. Then they might be in the mindset of talking to 2 to 3 people, so that they want to be sure that whom they want to go ahead with. Even I don't resonate with that personally, but I don't feel personally that there is a harm in that. Having said that, I feel that can impact your mental health. It impacts my mental health big time. I don't know, I mean, I had a friend, guy friend, 2020, 2021, 2022 वाले time पे, like, he was looking for a suitable match, and ये उसके अपने words हैं that, you know, I was talking to like multiple people, and he was talking to this one girl for a really long time, and he was constantly comparing everyone with that one girl जिससे वो बहुत लंबे टाइम से बात कर रहा था. And I said that you cannot compare everyone with that one girl, because तू उससे इतने लंबे टाइम से बात कर रहा है. She knows you in and out, and you have known each other all your life. Comfort level भी तो हो जाता है. हाँ, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते. तो पहली चीज़ तो ये कि जब आप 3 लोगों से एक साथ बात करो ना, आप कंपैरिजन में पड़े रहते हो, और कंपैरिजन सबसे बुरी चीज़ है 3 लोगों के बीच में, क्योंकि वो तीनों लोग अलग अलग हैं. आई फील कि अगर आप जेन्युइनली किसी में इंटरेस्टेड, अगर आप जेन्युइनली अपने आप में इंटरेस्टेड हो ना, किसी को छोड़ो, अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में एक रियल एक रिलेशनशिप चाहते हो, तो यू शुड बी एबल टू इन्वेस्ट 2 से 3 महीने इन वन पर्सन. एटलीस्ट गिव दैट पर्सन 90 days टू रियली नो दैट पर्सन. आप 90 दिन में समझ में आ जाता है आपको किसी के भी साथ, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट. 90 days के बाद का जो टाइम होता है, 4 महीने आप लगा लो, 120 days में आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान आपके लिए है या नहीं है. Saying that, I personally feel that men usually get that feeling in like 2 to 3 meetings, one deep conversation with a woman, 2-3 बार में men really get to know if she is the one or not. लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है, women take some time to really gauge कि ये बंदा है या नहीं, because we as women take time. For us it is all about building, you know, कि brick by brick how is that person behaving in different situations. बट बंदे आई फील दैट दे गेट दैट वाइब 2 या 3 बार में ही कि इसके साथ आगे क्या है, चलेगा या नहीं चलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इफ यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन, टॉक टू दैट वन पर्सन, एंड उस इंसान को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो, उस इंसान को जेन्युइनली ट्राई टू लर्न दैट पर्सन, यू नो, कि But do you think people have that much of patience these days? हाँ, तो वही तो, that is the whole messed up thing ना, because apps and everything and so many options and distractions have made us this way कि हमें लगता है कि हमारे पास इतने सारे options हैं. वही तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है ना स्तुति, कि एक टाइम पे अगर आप 5 apps पे हो, आपको लग रहा है कि बहुत सारे options हैं, बट आप उनमें से बात तो एक के साथ भी नहीं कर पा रहे. आप फ्लर्ट शायद 50 के साथ कर सकते हो. You will probably go out and have sex with as many people as you want, because there are so many people out there. But for settling with one person, it takes patience, it takes effort, and it takes communication. और अगर आप वो communication effort नहीं पहले दे पा रहे हो किसी एक इंसान को, मे बी बिकॉज at the back of your mind you think कि आपके पास options हैं और आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, तो फिर I don't think so you are right now in the state कि आप settle हो सको. State of mind आपका ही नहीं है, क्योंकि जिसको सेटल होना होता है, जिसको जेन्युइनली कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए होता है या प्यार चाहिए होता है ना, वो इंसान एक्चुअली में एक इंसान से बात करता है, उसको समझता है, और फिर उसको समझ में आ जाती है कि यार ये नहीं है मेरे लिए, मुझे कोई और ढूंढना है, देन दैट पर्सन मूव्स. बट आप एक इंसान को खुले दिल से ऑप्शन देते हो बात करने के लिए. But do you think, I feel that work more in your 20s or say early stages of life. Reason being, at that stage, like आप school or college में होते हो, and those are the days when you are like mostly attracted to that one person in your college. But then coming back to what I was saying, that's a organic setup where you see people. Virtually you're always feeling just like food apps. आपको लगता है कि Zomato पे बहुत option, आपको लगता है Swiggy पे, Blinkit पे, like in the era of e-commerce, like in the era of quick commerce, I should say, not e-commerce, you constantly feel that there are choices. That's why I feel, मतलब coming back to dating apps and coming back to inner clarity, when you know what you want now, then you will align your actions accordingly, and I think then there will be less people who would want to go to
dating apps rather than organic setups where you are pursuing your interest and then you meet people accordingly. Yes. So that was our point when we started this discussion. Okay, I think what is better is you pursue your interest. And having said that, I feel कि ज़रूरी नहीं है कि उसके केस में आपको offline interest pursue करना है. I feel you can still pursue online interest. Having said that, coming back to how we met first, right? I was a This podcaster. is my favorite love story. We keep on saying that. बहुत बार बोल दिया अपनी story. इतनी बार बोल दिया कि अब तक हमारे जो audience है उसे तो पता चल ही गई होगी. That I was doing podcasting and I approached her and I wanted her to be my guest and that's how we met and that's how our connection grew organically. Like it was not that. Romance, slow burn friendship. Yeah, kind of slow burn friendship. And I sorry to interrupt you. Yeah. I genuinely feel anything, and this is something very spiritual, which I want to say. Anything which is sent by God, it will take time, and it is a slow burn when it's sent by God. I second you to every word you said. Just adding. What I realized in later years of my life, and which is what I want to give a lesson to any people who are in their 20s or early 30s, that if you want to meet someone, if you genuinely want to meet the person that you want to be with, pursue your purposes. Okay. Because when you pursue your purposes, where there is a, I mean, goal is clear. Again, coming back to inner clarity, that this is my area of interest. This is what I want to do. I genuinely wanted to talk to new people. I genuinely want to talk to different people and know their perspective and mindset. I saw you online. I liked what you were saying. I liked what you were doing at that time. Now also. So that's how you meet the people who are meant to stay longer in the journey. Agreed. ठीक है. So स्तुति, अभी आप बोल रहे थे कि like वो जब ऑर्गेनिकली मिलते हैं, जो like टीनेज या अर्ली 20s में होते हैं, मुझे लगता है कि आप किसी से कैसे भी मिल रहे हो ना, whether you are in your 40s, I'm in my 40s. I've just started my 40s. I mean, ठीक है, age is not a problem, but still यार clear होनी चाहिए. My 40s is just started my 40s. And I am in my 30s. तो ये जो 40s और 30s की जो जर्नी है स्तुति, मुझे ऐसा लगता है कि because you are so rooted in your own life, you have already built a life, and now when you are seeking someone for a long term, किसी भी कैपेसिटी में, शादी हो, कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, बीइंग एक्सक्लूसिव हो, whatever name you give it, आप genuinely उस इंसान को टाइम तो दो. अगर जैसे आप बोल रहे हो कि एक टाइम पे अगर 30s में अगर किसी को रिलेशनशिप चाहिए, लेट 20s में चाहिए, and if they are talking to 5 people, that is anyways not going to serve their purpose. That's what we were coming to the first point. Because that's what, when I tried, it was more but the body it was painful for you. It was painful, it was suffering, it was very much tolling on my mental health, because you're constantly either in self-doubt or you are just getting a dopamine which has no meaning, because obviously someone is cheap dopamine hit hai. Because there is a random matching hit and then somebody is complimenting you, they have not even seen you, and when they might see you, they might not feel that feeling when what they have felt when they were like बहुत मतलब trend type हो गया, but वैसा बोल रही हूँ, ठीक है. So I feel कि हाँ, तो coming back to that's like toll on mental health. So हम जो बात कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, at some stage I got an inner clarity that what I want in my life, these are the 4-5 things I want to pursue as a purpose, as for yourself as a हाँ, कि ये 4-5 चीजें मैं as a purpose I want to pursue, ठीक है. And जैसे जैसे मैं I think जैसे जैसे मैं pursue कर रही हूँ, I am getting that clarity that what I want and what I don't want in my life, in terms of people, in terms of opportunities, in terms of everything. So मैं जो बोलना चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ, काश मुझे ये बात अपने 20s में पता होती, काश मुझे ये बात अपने अर्ली 30s में पता होती, जो मैं आप लोगों को या आपको या किसी भी और को who are even younger to you can tell them कि, और मे बी शायद मेरे बोलने से किसी को समझ में भी नहीं आया, बट मे बी व्हेन यू आर एट माई स्टेज और यंगर देन मी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. हाँ, मतलब बेसिकली जब हम पार्टनरशिप की बात करें ना, मैं स्तुति की बात को अगर पूरा एक कंसोलिडेटेड वे में बोलूँ,
तो जब हम पार्टनर देख रहे होते हैं अपने लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म, हम यूजुअली सोचते हैं कि उस इंसान में ये क्वालिटीज हों, बट हम ये नहीं सोचते कि मेरे अंदर क्या होना है। एग्जैक्टली, यू नो, तो हम क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लैक, दैट ओके आई वांट समवन हु इज एक्सट्रीमली रिच, बट आर यू रिच? I'm looking for someone who is who has a perfect body. But are we having perfect body, right? So if you are like, okay, I want a partner who is like so fit, having six-pack abs or whatever, like fit, then how much you are working on your fitness. Exactly. If you want the other person to be rich or having this kind of car or this kind of money, and I'm not saying there is a race happening, or there is a comparison happening. I'm saying, are you pursuing the way you want to pursue someone who has those qualities? Agreed. तो तभी आप जो बोल रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ, if you want a certain kind of person in your life, be that person first. Exactly. And then still you can expect that, yeah, I can now, being this person, I can expect someone to this stature in my life. तो कई बार जब हम And that's why celebrity generally get married to people who are like, if they are fit, the other person are fit. If they are rich, the other person is rich. Yeah. If they are entrepreneur, the other person with them is an entrepreneur. Or eventually they'll become like that, like two people building something, or two people doing something, or two people building goals. So that's the whole point. So ये आता है inner clarity से. तो इनर क्लैरिटी ना, यूजुअली पीपल थिंक इनर क्लैरिटी अबाउट द रिलेशनशिप. इनर क्लैरिटी, द फर्स्ट स्टेप इज टू बी रियली क्लियर अबाउट व्हाट डू यू वांट. तो ये वाली चीज आपने बहुत सारी रील्स में या इन जनरल भी सुनी होगी, बिकम द पर्सन दैट यू वांट, बिकॉज यू रियली नीड टू बिकम दैट पर्सन फर्स्ट. अगर मुझे कोई चाहिए कि बंदे के पास कुछ भी व्हाटएवर प्राइवेट जेट हो, हाँ, तो क्या आपके पास प्राइवेट जेट है? क्या मेरे पास है? Exactly. मेरे पास है. आई सी सो मेनी पीपल जो अपनी थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं. A lot of millennials and a lot of Gen Zs also come. A lot of people who are in the process of looking for someone, they come and their first thing is, यार मुझे ना बहुत ऐसा सा बंदा चाहिए. क्या आप वैसे हो? क्योंकि जब आप अपने अंदर वो चीज़ नहीं है, इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल. आप एक दूसरे में फिट इन होने की कोशिश करो, बट फिट इन होगे कैसे जब आपके पास उतना स्पेस ही नहीं है उस इंसान को लेने का. I've also seen people who wanted to manifest, let's say, someone who was very popular. They eventually met that person, they actually dated, and then they broke up really bad. और जो इंसान manifest कर रहा था उस अपने famous celebrity like partner को, जो manifest कर रहा था वो ही उस चीज़ को digest नहीं कर पाया, वो ही अपनी manifestation को digest नहीं कर पाया, और वो ही इंसान ने eventually break up करा. That was the person who walked away, because आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम द प्लेस ऑफ लैक. ठीक है, कि आई वॉन्ट दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन हैज दिस सोशल मीडिया ऑरा कि ओके ये तो बंदी बहुत ही सही है, ठीक है, आई रियली वांट टू बी विद हर. बट जब आप उसके पास जाते हो, आपके अपने अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है. जिक्सॉ पजल में आप किसी के साथ फिट इन तभी हो पाते हो जब आपके पास वो वाला उतना स्पेस है. अगर आपका स्पेस छोटे, सामने वाला बंदा कहाँ से उसमें सेटल हो जाएगा. तो फर्स्ट यू नीड टू रियली वर्क ऑन योरसेल्फ एंड रियली बी क्लियर अबाउट कि आपको लाइफ में बंदा कैसा चाहिए और उस बंदे को कैसी बंदी चाहिए होगी. तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आती है. एंड वंस यू आर ऑन दैट प्रोसेस, नो वन इज आस्किंग यू टू कि एकदम आप वैसे परफेक्ट बन जाओ, बट वंस यू आर ऑन दैट वे, वंस यू आर ऑन दैट पाथ, तो इवेंचुअली आपको कोई ना कोई. So basically coming back to give an example, so supposedly somebody into fitness, तो वो जिम जा रहा है, अपनी कॉस्ट्यूम क्या पता उसे कोई जिम में मिल जाए, right? So supposedly कोई podcasting जैसे I wanted, I connected, and then we met, and if you are on that path, maybe somebody who has similar interest as you, or somebody who is pursuing the same path as you guys connect, and then you had some similar organic conversation going, and that's how you connect. So, and having said that, हम नहीं बोल रहे यार कि आप डेटिंग ऐप्स मत जाओ. You can go if it suits you. यार वो तो जर्नी का पार्ट है. आप जाओगे, आप फेड अप होगे, and then eventually you'll realize that it's not for you, or it is for you. It is for you. That's again a personal journey. But coming back to what I was saying, that I have been there, done that. I felt, though I'm not saying कि I have got the results now, but I feel this path is much better. This is much more क्या बोलेंगे उसको, fulfilling, and this is much more
contentment giving rather than any other thing. So point, coming back to point one, which is the core theme of this quarter, inner clarity is equal to outer action. तो जब जैसे आपको inner clarity आएगी ना, आपको ये भी लगेगा यार कि मैं आप पे शायद थोड़ा टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ, let me pursue my these four hobbies. और genuinely टाइम वेस्ट होता है because your mind, मैंने 15 दिन, मतलब मैंने genuinely वो ऐप डाउनलोड की थी because I really thought that you know maybe this, मतलब लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें when you have been through and I've traveled a lot, I've tried different careers, right? I've met different people. तो मुझे लगा कि चलो इसको भी एक ट्राई देना चाहिए. And I have a very open heart when it comes to anything in life, trying anything in life. Yeah. तो मैंने genuinely, I really wanted to try it, but then I realized that this is not for me. और वो 15 दिन काफ़ी थे ये समझने के लिए. अब ये आपके ऊपर है कि समझ में सबको आ जाता है. I think हफ्ते 10 दिन में, 1 महीने में सबको समझ में आ जाता है. आपको मुझे भी पहले 7-8 दिन बहुत डोपामिन हिट मिल रहा था उससे. दैट आपकी ईगो बहुत बूस्ट होती है ना, बिकॉज सडनली इतनी सारी अटेंशन मिल रही है आपको कि ओ माय गॉड, कहाँ तो मैं एकदम घर पे बैठ के सेशंस ले रही हूँ, राइट? आई एम अ थेरेपिस्ट, आई वर्क फ्रॉम होम, मैं ऑनलाइन सेशंस ले रही हूँ. मेरा रियल वर्ल्ड से कनेक्शन मतलब कम है एज कम्पेयर टू समवन हु गोज टू ऑफिस. लाइक स्तुति गोज टू ऑफिस, तो ये जाती है रोज हफ्ते में 3-4 बार ऑफिस. शी मीट्स पीपल, शी हैज अ रियल वर्ल्ड कॉन्टैक्ट. माई रियल वर्ल्ड कॉन्टैक्ट इज नॉट एज मच. तो मेरे लिए तो वो पहले 7-8 दिन में लाइक अमेज, ऐसे डोपामिन हिट मिल रहा था मुझे कि मजा आ गया, इतनी सारी टेंशन. बट देन because I'm a bit self-aware, I realized that this is really bad for my mental health. It's really not serving my purpose and it is draining. It is draining for my energy. तो I backed out. तो ये पॉइंट है कि ठीक है, किसी को लग सकता है, कोई उस चीज़ को enjoy कर सकता है, but and if it's working for you, good on you. I mean, amazing. You're on the right path. But for people, and I assume जो लोग हमारे पॉडकास्ट को सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे जैसे ही हैं, राइट? बिकॉज हमारा ऐसा नीश है जिसमें बहुत सारे ना मासेस बहुत जल्दी से कनेक्ट नहीं होंगे हमसे. तो आई थिंक जो हमारी नीश के लोग हैं वो थोड़े हमारे जैसे हैं. तो आई फील के इफ़ यू आर समवन लाइक मी एंड स्तुति, देन मे बी यू शुड गिव अ ट्राई टू योर हॉबीज and purposes. आपको पर्पस नहीं भी पता ना, क्योंकि पर्पस कीप्स ऑन इवॉल्विंग एज यू इवॉल्व. True. है ना? Completely agree. आप इवॉल्व करते हो, यूनिवर्स आपको नया पर्पस देती है. बट अगर आपको अभी नहीं पता कि आपका क्या पर्पस है, गो बैक टू योर चाइल्डहुड. व्हाट वाज दैट वन हॉबी दैट यू रियली लाइक्ड? जो पसंद है वो करो. उस टाइम पे अगर लग रहा था कि यू नो पेंटिंग करनी है, पेंटिंग सीखनी है, पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करो ना यार, वर्कशॉप्स करो ना, वहाँ पे मिलेंगे ना लोग अपने इंटरेस्ट के. एंड दैट्स व्हाई यू एक्चुअली like meet people organically. Exactly, I agree completely. And coming back to you, the one who are meant to be it friendship, be it partnership, be it business partnership, be it anything, you will meet the right kind of people. And कई बार आप genuinely किसी से ऐसे, अभी dating apps की बात हो रही थी. I have a client, he is in Europe, and he started like dating apps वहाँ पर. He met a girl and उसके साथ, लड़की के साथ कुछ नहीं हो, बट दे स्टार्टेड एन ऑनलाइन बिजनेस टुगेदर. There are many people like that. हाँ, they started an online business together. और उस बंदी की जो बेस्ट फ्रेंड थी, they started dating and they are getting married like in this year. तो कई बार आप किसी से मिलते हो और आपको नहीं पता होता कि मिल के आप दोनों का क्या होगा. मे बी आप मिल रहे हो किसी से कि with the intention of romance, but you never know, साथ में आप दोनों बिजनेस स्टार्ट कर लो, साथ में आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ. Maybe that is that one person, like there's that theory na, Stuti, 6 people away. You are always 6 people away from the person you are meant to be with. हाँ, तो maybe that is the 6th person जिससे आपको मिलना है और उसके बाद आपको आपका 7th क्या बोलते, मुझे याद नहीं आ रहा. मैंने आपको बताया था ना the 6 degrees of separation. 6 degrees of separation. तो वो 6 लोग, क्या पता वो 6th इंसान हो जिससे मिलने के बाद आपको यू नो मे बी उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, मे बी उसका कोई दोस्त हो, मे बी उसका कोई भाई हो. यू नेवर नो, राइट? तो या मे बी उसको कोई ड्रॉप करने के लिए आया हो, रैंडमली आपको मिल जाए, या मे बी वो लास्ट बंदा है जिससे आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद आपको वो बंदा मिलना है. सो द पॉइंट इज दैट बी ओपन. और हम कई बार एक सेट इंटेंशन से जाते हैं किसी से मिलने के लिए कि हम तो इसी इंटेंशन से मिल रहे हैं. वो इंटेंशन अपने आप में क्लियर होनी चाहिए, बट कई बार मिलने के लिए बहुत खुले दिल से मिल लेना चाहिए. एग्जैक्टली.
सो आई थिंक आज के लिए हम इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म. एंड ऑल्सो वी वांट टू नो योर मल्टीपल व्यूज, लाइक डू यू वांट दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, व्हाट डू यू वांट इन अपकमिंग टाइम. तो प्लीज़ एंगेज, प्लीज़ टॉक टू अस इन कमेंट्स, वी लाइक टू नो मोर. ठीक है, तो ये सब you can do, that will be great help. Plus we are starting our monthly membership program. The most important thing. So go ahead, tell about. So we are starting this monthly membership program because हमारा पहले एक हमने डिवाइन फेमिनिन ग्रुप किया था जिसमें बहुत सारी फेमिनिन्स थी हमारे साथ and they were really interested in for us to start something जो हम continuously करें monthly. But उस टाइम पे because I was in Australia and Stuti was in India, तो हम खुद ही नहीं कर पा रहे थे अपनी चीज़ें. So now I'm in India, Stuti is in India, and we are both starting this Namaste Narrative monthly membership. जिसमें there are like multiple activities every month. Stuti is a healer and I'm a psychologist. वो जो combination है मिलके with mental health and your emotional spiritual health, that is basically the point of this group, of this membership program. So if you are really interested, we'll mention all the details in the description. तो आप check out कर सकते हो. Yeah, that's it. So yeah, that's it for today. Thank you so much for listening to us, and please drop in your comments and tell us. Please comment कर ये बता देना कि यही और चाहिए या ऑनलाइन जाए वापस या फिर जैसा भी करना है, बिकॉज हम ये पहला आउट डालेंगे, then we want to know your views and then we'll proceed forward for the year accordingly. So help us know. Yeah, तो ठीक है, I think we can. So that's it for today. हम मिलेंगे next episode में. Till then, bye. Namaste. Bye.